So I hope you are aware that from Monday to Thursday, 11 a.m. in the morning, we have this session. So today is 28th September and we are here with the Hindu analysis of 28th September. Okay, am I audible? आवाज आ रही है मेरी? Okay, one more thing, this is a small announcement that on 30th September, that is day after tomorrow, at 11 a.m. in the morning on the same YouTube channel, we'll be having a 6 hours non-stop marathon. Okay, so from 11 a.m. onwards, okay? So this will be on the same YouTube channel. So please subscribe to our channel. If you have not subscribed, you just subscribe button there. Please subscribe to that. Okay, so let's start. Today is Thursday and we are here with these are the two important articles. The first one says hit jobs on foreign soil, not India's policy, says Mr. S. Jaishankar, the Foreign Minister of India. The next one is Manipur government extends AFSPA in Hill district for 6 months. So these are the two important things. Let's start with this one. So basically, actually, there have been allegations by Canada that 𝗟𝗲𝗴𝗹 killing in that government in India has been responsible, or India was involved, something like that. So S. Jaishankar has clarified it that hit jobs matlab wahi jo the allegations that is being put. So on foreign soil, not India's policy. That what he has said. A minister says Ottawa. Ottawa matlab here the capital of Canada is Ottawa. So basically he is referring to Canada. Was asked to provide any specific information on 𝗟𝗲𝗴𝗹's death. He says Canada has a very permissive environment for secessionist activity, has also seen organized crime. Okay, secessionist activity matlab hota hai separatist activity. Okay, and permissive attitude का मतलब होता है कि not very strict का मतलब इस sense में कि the Canada is not very strict as far as separatist tendencies are concerned and all that is what he has said. Not very strict, you can say like that. Okay, okay, and has also seen organized crimes also we have seen in the Canada and also in the latest. That is what it says. He says in the latest round of sparring between India and Canada over the killing of Khalistani separatist leader Hardeep Singh Nijjar in British Columbia. So British Columbia is actually a state or a province in Canada. Okay, do not say that this is in Britain. British Columbia is in Canada, not in Britain. Okay. So last June, External Affairs Minister S. Jaishankar said that the Indian government had told its Canada counterpart that it was not its policy to engage in such acts. Counterpart matlab hota hai. So it's when he's saying that Mr. S. Jaishankar has told its Canadian counterpart means Canada's foreign minister. Okay, that is what you have to understand it. Okay, so we told the Canadians that this is not the government of India's policy. That is what it is said, है ना? The government was open to looking at it and all. तो यही सब बात हुई, ठीक है? So that is what it is. Now, since we are actually talking about it, there's a question for you. The question is: India established diplomatic relations with Canada in X. Your options are 1951, 1947, 1971, 1991. See, you have to understand one thing, that since India-Canada relationship is in the news, okay? So now you are supposed to read about the India-Canada diplomatic relations in the past as well, okay? तो थोड़ा सा आपको history में जाके past में देखना पड़ेगा कि what are the relations in the past when India and Canada had relationship, diplomatic relationship, strategic relationship. These things you should be knowing it. Okay, anyone? Yes. 1947. Okay, thank you Aditya Kumar Safi. Okay, 1947. ठीक है. So 1947 is the right answer. देखो actually क्या है? If you go and read this is the website from Ministry of External Affairs. ठीक है. So India established diplomatic relations with Canada in 1947. It is clearly written. India is represented by High Commission of India in Ottawa. High Commission matlab I hope you are aware, embassy shared by I mean if there is embassy among Commonwealth nations. So both are part of Commonwealth nations. Then we, instead of embassy, we use the word High Commission in Ottawa. Consul General जो होता है, consulate is actually very similar to embassy, but they are not in capital. ठीक है, अगर वो capital में नहीं तो हम उसको consulate कहते हैं. जैसे for example, Toronto and Vancouver, these two are very famous city in Canada, and we have consulate in Toronto and Vancouver as well. Okay, it is very similar to embassy, but actually it is not in capital. So Ottawa is the capital, so in capital there will be embassy or High Commission, and consulate will be in
Toronto and Vancouver. Generally, the head of embassy is what we call it as ambassador, right? And consulate is headed by consul general and all. So these all are foreign service officers, right? IFS, Indian Foreign Service Officers, who actually handle these. Okay. Yes. India established diplomatic relations with Canada in 1947. Canada is represented by Canadian High Commission in New Delhi, of course. So High Commission or embassy will be in capital. So New Delhi is the capital. And consulate, you will find it in Chandigarh. There is consulate, Chennai, Mumbai, and a consulate in Bangalore. So 1, 2, 3, 4 consulate we are having of Canada. Okay, in in India. Okay, so 4 consulate and 1 embassy, where there is 1 embassy and 2 consulate of India in Canada. Okay, so just have an idea. सब चीज basic है, पता होना चाहिए. Now there is one more question. Prime Minister's visit to Canada in X elevated the bilateral relationship to a strategic partnership. तो X आपको बताना है क्या है. Your options are 2015, 2011, 1991, 2006. देखो एक्चुअली क्या है, ये सब टर्म्स कभी कभी न्यूज में आता है, मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. ठीक है. So whenever 2 nations is having strategic partnership, it is considered as a better relationship than common normal relationship. Strategic means it in the sense that there will be more defense related deals and all. That's called as a strategic partnership. So PM Modi actually visited there in 2015. Yes, A is the right answer. Very good. Yes, Zoya Khan, Yash Gupta, you all are right. Gauri, Alia Kausar. So actually again on the same website from Foreign Ministry's website I have taken it. PM Modi's visit to Canada in April 2015 elevated the bilateral relations to strategic partnership. Okay. Justin Trudeau paid his state visit from 18 to 24 February 2018. Okay. So just have an idea about it. Okay. Now the next one is Manipur government extends AFSPA in Hill district for 6 months. AFSPA stands for Armed Force Special Powers Act. I hope you are aware of that. So that is what is being talked about. The disturbed area status under the act will remain applicable in all the hill districts which are dominated by tribal communities. However, since 2022, the AFSPA has been gradually withdrawn from the valley districts. So valley area में धीरे-धीरे withdraw किया जा रहा है, which are dominated by Meitei community. So there is hill and there is valley. है ना, जैसे पहाड़ी है तो. I hope you are aware. जैसे this is called as hill. ये नीचे जो होगा valley होगा. ठीक है. So valley area में gradually it has been withdrawn, but this will remain in the hill districts and all. Okay, yes. Okay, the concept of Armed Force Special Powers Ordinance first came in the year. Your options are 1920, 1857, 1942, 1984. कब आया था बताइए तो? सबसे पहले ये Armed Force Special Powers Ordinance करके कब आया था? Sir, if I start CLAT Ignite magazine, how much month should I? 1 month. अगर आप पूरा दिन भर पढ़ोगे तो 2 दिन में कंप्लीट कर लेना चाहिए. यू शुड है ना. एट मैक्स 2 days में आपको 1 month से क्लैट इग्नाइट मैगजीन कंप्लीट कर लीजिए. यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. 1942 एक्चुअली क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था उस टाइम पर. ठीक है. फर्स्ट जो आइडिया आया था, देखो ये वी आर टॉकिंग अबाउट, इसलिए ऑर्डिनेंस लिखा मैंने, तो टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश टाइम. Armed Force Special Powers Ordinance 1942 was promulgated by British colonial government on 15th August 1942 to suppress Quit India movement. फिर बाद में after independence AFSPA was passed and all 1958. That's true, but I was talking about the first one. So the right answer is C is the right answer. Yes. So just have an idea that under AFSPA actually the military personnel have more power than common people, right? I mean than in other areas. So they can search without warrant. They can search and all. So a seizure operation can be done and all. So they have extra power in these areas. So C is the right answer. Okay. Before moving on, this is an all India win mark. We are requesting you all, please attempt it. We have got to know that a lot of people are not attempting it. आप लोग attempt करो. All India open mark from 22nd September to 1st October. Please do attempt it. Just go to app, go to CLAT section और वहीं पे सामने ही में आपको मिल जाएगा. ठीक है. Download the app, go to CLAT section, and there you will find. Okay. This is the next year. This is the 2024 test series. है ना. 2024 का many people have joined it but they are not attempting it. Please attempt it online mode में. That would be helpful because this will help us get to know which who is where, and this will be helpful for you also to compare yourself with other students, right? है ना. And this is a course for 2025. Those who are attempting next year. If you have any query, call on this number 95388 95678. Now let's start with this. G20 screen over Mazdoors their rights. देखो actually क्या है. देखो जब when G20 summit happened, on the same line there were summits like S20, Science 20, Business 20, similarly L20, Labor 20, है ना.
all these summits happened before the G20 means scientists from all 20 nations met, business leaders of 20 leaders, labor unions of 20 leaders met and all. So that is what you should be knowing it. So that is what he's talking about on 9th September. PM Modi reading of final declaration of G20 and all happened. African Union was added. I hope you are aware. Was granted membership and a sense of togetherness among the global south was palpable. Now, अब देखो क्या मैंने आपको ये सिर्फ बताया है already, global north and global south. So this is this line is called as what? कोई बता सकता है इस line को क्या कहते हैं? So this line differentiates. The light blue one is actually global north, and the red one is global south. Global south is a developing nation. North is a developed nation, right? Now, so basically, India has added African Union in G20, and this is an initiative towards actually pushing global south, है ना? Because yes, India has added African countries around. ठीक है? हाँ, brand line इसको कहते हैं. Good. हाँ. So very good. So there are fears that a joint communique not be issued as the Russia-Ukraine war was ongoing and all. So एक fear था कि maybe the joint declaration would not happen, but the joint declaration happened. However, the word actually G20 is the word Russia is not mentioned in this, है ना? So basically Russia-Ukraine war is being mentioned, but the word is कि all part states should act in a manner consistent with the purpose and principle. So basically directly direct accusation on Russia is not mentioned here. Okay, so that is what you should be knowing it. Now I hope you are aware that the next G20 summit we are passing it to Brazil, and the president is Lula da Silva. Okay, who will be the next president and all. Yes. Okay, unfortunately, India missed a great opportunity to protect workers' rights. Yes, so here he is praising it, but on one aspect he is not happy, rather he is criticizing it, and that's about Labor 20. That he is saying India should have done more and all talks regarding labors and all, labor rights related. So he's saying that Bharatiya Mazdoor Sangh, which is having affiliation with the ruling party, it was participating and all. And earlier ITUC used to participate, International Trade Union Confederation. इसको थोड़ा सा पढ़िएगा. It is a confederation of global trade unions. So this you should be knowing it. So they boycotted the meeting and all. तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा. Something about ITUC, because he is talking about International Trade Union Conference. It is the world's largest trade union federation. Okay. Now the question is, where is the headquarters of ITUC, International Trade Union Confederation? Your options are New Delhi, Brussels, Paris, Berlin. What is the right answer? बताइए. बताइए. हाँ, किसी ने पहले ही आंसर कर दिया, ब्रसेल्स. हाँ, ब्रसेल्स में. ठीक है. So this is a trade union, international level trade union, आप समझ लो. ठीक है ना. ट्रेड यूनियन समझते हो ना, जैसे जो लेबर्स होते हैं ना, उन लोग की जो यूनियन होता है, that's called as trade union. I hope you are aware of this, है ना. So that is what he is talking about and all. तो क्या क्या बात कर रहे हैं. So उससे पहले एक और क्वेश्चन है, because he is talking about the topic which was asked as a question last year. इसका आंसर बताइए तो. Let me see how many of you are correct. सबको लाइक बटन प्रेस कर दो. We are seeing only 11 likes, at least 30 plus ले जाओ. What is the name of the system used to monitor and regulate migrant laborers, which is used in Qatar and a few other countries, which came under heavy criticism in the build-up of FIFA World Cup? So last year on 18th December 2023, this exam happened, and the 2022 this exam happened, and this question was asked. Yes, Kafala system. Yes, Nandana, Nandita, Gauri, Jatin, Safi, you all are right. अच्छा, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट भी दिया है एग्जाम में. जब भी आप दो सिमिलर ऑप्शन देखो, whenever you find similar option, go for it, है ना. Probability is very high. So the right answer is C is the right answer. ठीक है, Kafala system is the right answer. Indian government should have taken the opportunity to address the serious issues facing workers in India, such as forced labor and all. So he said that we should have taken this G20 L20 opportunity, the Labor 20 meeting. We should have talked about forced labor, modern day slavery. इसको बताते हैं ये. This is important. And the Kafala system, which is prevalent in Arab Gulf nations. Okay? है ना, यहाँ पे Kafala system की बात कर रहे हैं. So basically Gulf countries. So here is India. So these are called as Gulf country because of Persian Gulf. This is the, we call it as Persian Gulf. ठीक है? जा. This is Persian Gulf. So the countries around it, this region, are called as Gulf country. For example, Iran, Iraq, Saudi Arab, Oman, UAE. Here is Qatar. ठीक है? And then here is Kuwait. एक और छोटा सा यहाँ पे country है, Bahrain is there. ठीक है? Okay. So just have an idea about it. So these are actually called as Gulf countries.
Now in Gulf countries this practice is prevalent. कफाला सिस्टम या केफाला सिस्टम भी कहते हैं, which is practiced in GCC, Gulf Cooperation Council countries. So these are GCC countries है ना, ये सब GCC countries हैं. खैर, okay. So like Qatar, Bahrain, Kuwait, Lebanon, Oman, ये सब जगह होते हैं, and UAE. Okay. And there have been accusation of exploitation of workers. So ऐसी बात आई है कि कफाला सिस्टम में there have been some accusation of exploitations and all. So he said, the author has said that this should have also been talked about. ये सब चीजें की भी बात होनी चाहिए थी. नहीं, रेड सी वो नहीं है, आप कंफ्यूज करके देखो, ये वाला पर्शियन गल्फ है. ओके, ये वाला रेड सी इधर लेफ्ट साइड सऊदी अरब के. ठीक है, ओके ना. और पर्शियन गल्फ इज फेमस. इसी रीजन में आपको ऑयल एंड नेचुरल गैस बहुत मिलता है. गल्फ रीजन, ऑयल एंड नेचुरल गैस. ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कुवैत में बहुत ऑयल होता है, इराक के इस रीजन में होता है, ईरान के इस रीजन में, सऊदी अरब के ईस्ट में आपने यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दमाम एंड ऑल. सो दीज ऑल आर दिस. बहरैन है, कतर है, यूएई है. ठीक है, सो दिस रीजन इज आल्सो फेमस फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस. सो बेसिकली दिस सिस्टम मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर माइग्रेंट वर्कर्स टू लीव देयर जॉब्स और चेंज एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल. ठीक है, तो कफाला सिस्टम के बारे में बोले कि दिस शुड हैव बीन टॉक्ड अबाउट एंड ऑल. And India, it should have been relief for Indian working class, especially in Arab Gulf, had these issues been prioritized. अगर ये सब की बात की जाती तो ये सब important होता. A lot of people, ये सब नंबर नहीं याद रखना है कितने लोग वहां रहते हैं, but just have an idea. India is one of the world's largest migrant sending country. A lot of migrants from India are being sent to other nations. आपको पता होगा largest remittance we earn. Remittance, आप समझते हो ना? You understand remittance? We have discussed that India is the largest remittance earner. Means we remittance. You understand? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जिसको इंडियन है, मान लो ही लिव्स इन न्यू दिल्ली, ही इज गॉन टू लेट्स से दुबई एंड ही इज अर्निंग इन दुबई, सेंडिंग द मनी बैक टू हिज पेरेंट्स. दिस इज कॉल्ड एज रेमिटेंस. ठीक है, वो दुबई में कमा रहा है, मम्मी पापा को पैसा भेज रहा है वापस, तो वो रेमिटेंस कहलाता है. ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड इट दैट इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, रैंक 1 एज फार एज रेमिटेंस अर्निंग इज कंसर्न्ड. यस, बिकॉज वी सेंड अ लॉट ऑफ migrant workers to other nations. Okay, so but the exploitation of Indian workers is not limited to the Arab Gulf. So he's saying it is not only in Arab nations but in other nations also. These types of exploitations we have seen. ठीक है, so अपने example दे रहे हैं, टेक्सटाइल में, ब्रिक इंडस्ट्री में, श्रिम्प फार्मिंग होता है, श्रिम्प वगैरह, आई थिंक फिश वगैरह होती है एक तरह की, कॉपर मैन्युफैक्चरिंग, फोर्स लेबर आर देयर, मॉडर्न डे स्लेवरी, ये टर्म बहुत न्यूज में आ रहा है इस आर्टिकल में. देखो, व्हेन यू रीड मॉडर्न डे स्लेवरी, दिस इज फ्रॉम यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट वेबसाइट. So according to them, these are the terms, these are the examples of modern day slavery. जैसे forced labor एक example हो गया, use of child soldiers हो गया, child labor हो गया, these are the things. Okay, so इसको जो है, जैसे slavery जो है technically तो पूरे world में अब नहीं exist करती है ना, because slavery is now the thing of the past and all, but still thing very similar to slavery is even today. अगर कोई forced labor जबरदस्ती से काम करा रहा है, वो भी एक तरह की slavery मानी जाती है. Okay, human trafficking and all. So इसी की बात करें, according to ILO, forced labor compulsory is all work or service which is exacted from any person and all. मतलब जो जबरदस्ती काम कराया गया, स्लेवरी, forced labor हो गया, तो आप समझ लो, कॉमन सेंस है. So basically India is also a signatory of C29. ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फोर्स लेबर कन्वेंशन है. देखो ये है C29 फोर्स लेबर कन्वेंशन 1930. So we are also the signatory of that. So that is what we should be knowing it. ठीक है, तो ये सब उन्होंने डिफाइन किया, what is forced labor and all, they have defined it. All these things will come under forced labor, modern slavery and all. My recent investigation experience of forced labor in the shrimp industry. So he's given an example of shrimp industry in Andhra Pradesh, the author himself. Shrimp, I think एक तरह का fish होता है, I guess, very similar to that. So उसी के बारे में वो अपना वाक़या सुना रहे. He is telling his own story and all, that whatever he has experienced while doing some research or investigation and all. ठीक है, so there have been incidents of forced labor and all. ठीक है, तो ये सब बता रहे हैं. कंपनीज विथ होल्ड आइडेंटिटी कार्ड सच एज आधार कार्ड, राशन कार्ड एंड डिनाई देम एक्सेस टू द डॉक्यूमेंट व्हेन रिक्वायर्ड अंटिल द वर्क इज डन, आल्सो एंगेजिंग फोर्स्ड लेबर. मतलब क्या होता है कि कंपनीज जो है ना, आईडी कार्ड जमा कर रही थी, वो वापस नहीं देती है, जैसा वो बता रहे हैं, जैसे आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, अनलेस अंटिल द वर्क इज डन कंप्लीटली, द कंपनीज डू नॉट रिटर्न बैक आधार और राशन कार्ड. So this is also indirectly of sort of forced labor and all. ठीक है, modern day slavery is important for India because exploitation of workers would increase, है ना. In India there are 530 million workers, of whom 430 million are in informal sector. तो a huge people actually working are in informal sector. देख रहे हो, 430 million out of 530 million. तो काफी बड़ी आबादी जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में. इनफॉर्मल सेक्टर में the workers are not registered, they are not white collar jobs many cases. ठीक है, so these are the things. This is not only an Indian problem, but a similar other all G20 nations are facing this.
ठीक है, तो ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब फोर्स लेबर, मॉडर्न डे स्लेवरी या इस तरह की चीजें, बाकी बाकी मुल्कों में भी ऐसा है. एंड यस, फर्स्ट एसडीजी टॉक्स अबाउट इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, है ना. सो दैट इज व्हाई लेबर सॉल्यूशन टू द लेबर प्रॉब्लम इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट we should be able to achieve sustainable development goal 1, that is eradication of poverty, right, है ना. Which of the following SDG talks about decent work and economic growth? SDG 6, 8, 13, 10, बताइए तो. थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट चलो ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ बिकॉज द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट वर्क रिलेटेड, है ना, मॉडर्न डे स्लेवरी, वर्किंग कंडीशन एंड ऑल, तो इसीलिए मैंने ही पूछा है. कोई बता सकता है एनीवन? Which of the following SDG talks about decent work and economic growth? Yes, the right answer is SDG 8. So B is the right answer. Yes, Nandana, Nandita, Gauri, Alia, Kausar. Yes, देखो कहाँ पे? Decent work and economic growth, right? So this is SDG 8. Then he is quoting Walk Free Foundation also reports that in 2020 G20 countries imported goods worth rupees 41 lakh crore made by workers of modern day slavery. So बहुत सारे लोगों ने इंपोर्ट किया चीजें जो कि मॉडर्न डे स्लेवरी से विक्टिम थे, वर्कर्स, उन्होंने बनाया था. सो दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट. ठीक है. नाउ एक साइड में आर्टिकल थी इंफॉर्मेशन एड्स पब्लिक सेफ्टी एंड इज नॉट अ ट्रिगर फॉर पैनिक. सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. एक्चुअली ये कल रिपोर्ट आई थी. 65% हाउसेज इन जोशीमठ इंपैक्टेड बाय लैंड सब्सिडेंस, गवर्नमेंट रिपोर्ट सेज. आपने जनवरी में सुना होगा, एक्चुअली इट बिकेम वेरी फेमस that in Chamoli district of Uttarakhand there is a city called as Joshimठ that I mean developed cracks. बहुत सारे बिल्डिंग में क्रैक्स आ गए थे, आपने शायद सुना होगा. So this is Uttarakhand and Uttarakhand you will find Joshimठ. Okay. Okay. So 65 government report says that 65% houses have been impacted by land subsidence and all. Okay. Yes, तो उसी की बात करें, sinking and all these things were coming in the news. So yes, there is a hydroelectric power project, Tapovan Vishnupad hydroelectric power project of NTPC and NTPC का. So many people actually have said, many of the locals were saying that perhaps this was also the reason for this. However, the NTPC have denied it. However, means these things were in the news, Tapovan hydroelectric power project, है ना. So ये सब पढ़ लेना, है ना. So just go and read these things, है ना. So ISRO came up with some report and all regarding it and all. Okay, so just have an idea. Go and read it, है ना. Okay, while this is eligibility case for ensuring that citizens in the hills are not denied basic amenities, yes, of course, those who are living in those areas, basic amenities like food, water, sanitation, etc., and clean water should be provided. So these are the things being talked about. Okay. Now, नीचे में एक article, the two heroes of Sanatan Dharma, their insights. तो इसको मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. You can read by your own. However, from here I will be asking some questions. ठीक है, जो important questions है, I'll be asking. So the first book, the question is. ये एक्चुअली इस आर्टिकल में डिस्कस्ड है. सो हु रोट द बुक? सत्य प्रकाश. योर ऑप्शंस आर मिस्टर दयानंद सरस्वती, मिस्टर स्वामी विवेकानंद, मिस्टर राजा राम मोहन राय, मिस्टर 𝗖𝗂 विद्यासागर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. बताइए. सत्य प्रकाश किताब किसने लिखी है? इट्स वेरी फेमस एक्चुअली. इट इज रिटन इन दिस आर्टिकल, टॉक्ड अबाउट इट. बताइए. Yes, Nandita has answered it correctly. The right answer is Dayanand Saraswati. Mr. Dayanand Saraswati has written this book, Satya Prakash. ठीक है. So just have an idea. और अभी recently उनकी 200th birth anniversary celebrate किया गया था 12 फरवरी को. So that is why it becomes more important. So A is the right answer to this question. ठीक है, Nandana, yes, you are right. Now the next one is, who among the following was the founder of Arya Samaj? Your options are दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, 𝗖𝗂 विद्यासागर. बताइए. आर्य समाज के फाउंडर का नाम बताना है. आई थिंक ये 1875 में शायद बना था. बताइए तो. फाउंडर ऑफ आर्य समाज. ये सब तो फेमस है, आप लोगों को पता होगा होपफुली. यस, अगेन द राइट आंसर इज दयानंद सरस्वती. सम पीपल आर सेइंग ऑप्शन सी. नहीं, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज बनाया था. दोनों अलग ऑर्गेनाइजेशन है. ब्रह्मो समाज इन आई थिंक 1828 के आसपास, 1820 वगैरह बनाया था, 1828 में. और ये आर्य समाज 1870s में, 1875 वगैरह बनाया था दयानंद सरस्वती ने. सो आर्य समाज एंड ब्रह्मो समाज आर डिफरेंट. ठीक है, याद रखिएगा. ओके, सो हियर द राइट आंसर इज ए इज द राइट आंसर. ठीक है, आप देख सकते हो. ठीक है,
social reformer, founder of आर्य समाज है ना, and he wrote सत्य प्रकाश also. Recently 200 years celebrate किया गया, so that's why it becomes more important है ना. So इसके बाद थोड़ा उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, just read it because since this is 200th year birthday, so there can be questions है ना. 200th birthday this year, हाँ. Who is famous for giving a speech on 11th September 1893? This is very famous actually, in Parliament of the World's Religion. Your options are दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, 𝗖सी विद्यासागर. बताइए तो. 11 सितंबर 1893 को अगर कोई सिटी का नाम बता दे तो आई विल बी वेरी हैप्पी. एक सिटी है किसी कंट्री में, फॉरेन कंट्री में, वहां. कैन यू प्लीज नेम द सिटी एंड द कंट्री आल्सो? यस, द राइट आंसर इज स्वामी विवेकानंद. इन विच सिटी? कौन से शहर में उन्होंने स्पीच दिया था? बहुत फेमस है ये. व्हाट इज द नेम ऑफ द सिटी? आई मीन एंड दिस सिटी इज इन विच कंट्री? यस, वेरी गुड. शिकागो कन्वेंशन, शिकागो, विच इज एक्चुअली इन USA. ठीक है. So B is the right answer. Yes. गौरी नंदिता काटम. Yes. ठीक है. So just have an idea. Okay. Now let's move on. Timeless quest. देखो कुछ और किताबें हैं, जैसे मैं बताता हूँ, राजा राम मोहन राय की कुछ किताबें हैं, उसको थोड़ा सा एक दो बार देख लीजिएगा. बिकॉज ही हैज अचीवमेंट्स लाइक ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन बैनिंग सती. ठीक है. 𝗖सी विद्यासागर वाज इंस्ट्रूमेंटल इन विडो रीमैरेज एक्ट पास करने में, करवाने में इनका रोल था. ठीक है. सो राजा राम मोहन राय हैज रिटन अ लॉट ऑफ बुक्स. ठीक है. दो तीन फेमस बुक्स हैं, उनको थोड़ा सा एक बार जस्ट गो थ्रू इट. ठीक है, एक दो बार देख लीजिएगा. ओके. नाउ दिस इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट नासा ओसिरिस रेक्स मिशन. दिस इज अ मिशन टू रिसर्च बेन्नू विच इज एन एस्ट्रॉयड. ठीक है. एस्ट्रॉयड समझते हो ना? यू अंडरस्टैंड एस्ट्रॉयड? सो इसी से रिलेटेड न्यूज है ना. उता एक प्रोविंस है यूएस में, उसी की बात हो रही है. ठीक है. So dropped off a capsule over the earth, leaving it to be pulled down by the planet's gravity and all. ठीक है. So to research about Bennu, है ना, it's a asteroid के बारे में. Now asteroid belt is found between which two planets? Jupiter and Saturn, Mars and Jupiter, Venus and Neptune, Mercury and Venus. बताइए. Asteroid belt is found between which two planets? बताइए तो. Percept of Jesus written by Raja Ram Mohan Rai. Yes, 𝗏𝗏 Sharma, right. Very good. You know about it, huh? The right answer is Mars and Jupiter. So B is the right answer to this question. देखो, एक होता है एस्ट्रॉयड बेल्ट, जैसे ना मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स. ठीक है ना, और इसके बीच में से एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है. Here you will find a lot of asteroids. ठीक है. और नेपट्यून के बाद में एक और बेल्ट होता है, उसको कहते हैं कूपर बेल्ट, कहते हैं क्यूपर बेल्ट समथिंग. ठीक है. सो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ एस्ट्रॉइड्स बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, एंड दैट्स कॉल्ड एज एस्ट्रॉइड बेल्ट. ठीक है. तो इसी के बारे में बात करें, थोड़ा सा आप अपने से पढ़ लीजिएगा. गो एंड रीड इट, है ना. फ्रॉम वुमेन्स रिजर्वेशन टू जेंडर इक्वालिटी. सो प्लीज टेल मी विच SDG टॉक्स अबाउट जेंडर इक्वालिटी. बताइए तो. ठीक है. सो आपको ये बताना, दूसरी चीज ये बताना है कि okay, so basically he's talking about that 1/3 reservation of women and all. We have discussed it that we are having 14.39% women's reservation. However, as far as national standard is concerned, it is I think 24 point something percent, है ना. So we are below that, and India ranks 141 out of this as far as percentage of women in parliament is concerned. Okay, even Pakistan, South Korea and Kenya are better. So Pakistan, South Korea and Kenya have better women representation in their parliament as compared to India. So India is having 14 point something percent. SDG 5 talks about gender equality. Yes. Okay. Yes. GS के लिए दीपक राठौर, please read newspapers because they are asking questions from newspaper. ठीक है. Okay, what is India's rank in global gender gap index? Your options are 121, 127, 136, 142. देखो रैंक से सवाल आ चुका है, और चूंकि अभी वुमेन्स रिजर्वेशन से रिलेटेड न्यूज में है, सो दे कैन आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड विद वुमेन. ठीक है. जैसे और क्या क्या पूछा सकता है? प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड विद वुमेन. कहां पर है, कोई बता सकता है? प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड विद वुमेन, वेयर डू यू फाइंड? यस, इसका आंसर 127 है अगर ये पूछा जाए. या वुमेन रिलेटेड लॉज बहुत सारे होते हैं. ठीक है. फॉर एक्चुअली
जैसे एक पॉश एक्ट है, इसको पढ़िएगा, पॉश एक्ट 2013. देयर इज अ वेरी फेमस जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, विशाखा गाइडलाइंस, विशाखा जजमेंट. This is also related with women, means empowerment of women and all, you can say, or justice for women. Then there are a lot of articles of constitution, जैसे आपने पढ़ा article 15 clause 3, article 16 clause 3, article 42 talks about maternity relief, उसके लिए maternity benefit act is there. फिर article 39 talks about equal pay for equal work, मैंने पढ़ाया पेड क्लासेस में. yes, very good गौरी. हाँ ठीक है. फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी, यूनाइटेड नेशन का एक रेजोल्यूशन है, लास्ट क्लास में आई हैव डिस्कस्ड इट, रिलेटेड विथ वुमेन, ये भी मैंने बताया है. ठीक है. सो देयर आर लॉट ऑफ प्रोविजंस रिलेटेड विथ वुमेन, स्पेसिफिकली रिलेटेड विथ वुमेन इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूएन असेंबलीज एंड ऑल. देयर आर लॉट ऑफ लॉज दैट हैज बीन पास, है ना, फॉर वुमेन रिलेटेड थिंग्स. ठीक है. और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी हैं, जैसे एक तो विशाखा गाइडलाइंस बहुत फेमस है सुप्रीम कोर्ट का, ना. ये पॉश एक्ट, ये 𝗟𝗏𝗴𝗃, राइट. हाँ. सो 3025 यूएन जनरल असेंबली, यस, रेजोल्यूशन एंड ऑल. तो चूंकि ये वुमेन्स रिजर्वेशंस रिलेटेड चीजें न्यूज में, सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट दे कैन आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड विद वुमेन. हो सकता है कोई वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट के बारे में पूछ ले, इन द पास्ट की हिस्ट्री में आप बताओ, जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पर वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट थे, हु वर वुमेन्स फेमस लीडर्स ऑफ वुमेन्स इन अमंग फीमेल्स एज फार एज इंडियन नेशनल मूवमेंट इज कंसर्न. शायद ये सब पूछ ले, वो डिफरेंट डायमेंशन से पूछते हैं ना. हाँ, Shabano judgment and all, a lot of judgments related with women is there. Yes, good. Okay, so India ranks 127 out of 146 as far as a global gender gap report is concerned. ठीक है. Okay, that is what is being talked about. ये हम लोगों ने डिस्कस कराया है कि census and delimitation होगा तब, then or after, and why the census has been freeze till 2026, delimitation has been freeze till 2026. We have discussed these things, है ना, in the past. ठीक है. When India-Canada ties were reset, तो इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेना. ठीक है. अच्छा, ये मैंने कल आपको बताया था, yesterday I have taught it that in 1985 there was a Kanishka flight, Air India flight, है ना, the bomb was placed and all, ये मैंने कल बताया था. तो उसी के, ये कनाडा के एम्बेसडर थे उस टाइम पर, नहीं, कनाडा प्राइम मिनिस्टर थे. In 2010 he came and he was in Toronto and giving respect or paying respect to the people who had died in that air crash and all. तो ये कनिष्का फ्लाइट के बारे में बात करें, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा बिकॉज आजकल न्यूज में आ रहा है वो. ठीक है. डेली बेसिस, शुभराज द्विवेदी, आप क्लैट इग्नाइट मैगजीन से रिवाइज कर लो. ठीक है. एंड विल बी हैविंग अ सेशन, जैसे मैंने बताया ना कि टुमारो, डे आफ्टर टुमारो ऑन 30 सितंबर 11 AM पर ऑन द सेम यूट्यूब चैनल विल बी हैविंग अ मैराथन. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है. सो डू ज्वाइन इट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड डे आफ्टर टुमारो ऑन 30 सितंबर वी विल बी हैविंग अ 6-hour मैराथन वेयर रिविजन विल बी डन. ठीक है. यस. Huge possibility for India US to back each other, says Mr. S. Jaishankar. I hope you are aware 78th UN General Assembly की session चल रहा है and all, है ना. So that is what he has said, talked about it, looking to at how much of the country should step on the gas and all. ठीक है, ये सब बात हुई. 78th General Assembly session is happening and all, है ना. So these are the things being talked about. हाँ, एक रिपोर्ट ये आई थी, ये भी थोड़ा सा, ये है इंडिया एजिंग एल्डरली टू मेक अप 20% पॉपुलेशन बाय 2050, यूएनएफपीए रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन, ये वाली रिपोर्ट होती है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड कहते हैं इसको, विच इज अ यूएन एजेंसी रिगार्डिंग आई मीन दीस थिंग्स एंड ऑल. तो उन्होंने ये कहा है कि देखो एक्चुअली क्या है, दे आर सेइंग इंडिया इज फेसिंग एजिंग पॉपुलेशन आर द फेमिनाइजेशन, रूरलाइजेशन ऑफ ओल्डर पॉपुलेशन. क्या मतलब हुआ, यानी ओल्ड पॉपुलेशन में वुमेन ज्यादा दिख रही है, एंड रूरलाइजेशन एंड रूरल population में old women, ladies are देख रहे हैं, old people. So you will find old people more increasingly in rural areas, and women are more getting older, I mean as compared to the males. It means, इसका मतलब क्या हुआ कि the life expectancy of women is higher. ठीक है. अगर आप चेक करोगे डेटा तो yes, life expectancy जो है ना, on an average in India women lives more than male. ठीक है. That is what is being talked about. ठीक है. इसके बहुत सारे रीजन है, वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल. ठीक है. अब देखो ये क्या बता रहे थे, देखो होता क्या है अभी राइट नाउ वी आर हैविंग डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये वर्ड लिखते हैं इंडिया के लिए. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड? मींस वी हैव अ ह्यूज यूथ पॉपुलेशन. सो इफ वी ट्रेन आवर यूथ पॉपुलेशन प्रॉपरली, if we will give them education, skill and all, of course India will see a lot of GDP growth and all. But after all, अभी हम लोग 2023 में हैं, तो अब 27 साल बाद he is talking about after 2050. So those who are young population, let's say someone is, let's say 30 years old. So after 27 years he will become 57, है ना. और अभी जैसे 35 का कोई है तो he will become 60 plus. So he will become a senior citizen, he or she.
तो जाहिर सी बात है उस वक्त आते आते जितनी बड़ी यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत एजिंग पॉपुलेशन बन जाएगी, है ना. सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, बिकॉज सिंस ऑल दीज यूथ्स दे विल बिकम ओल्ड बाय देन, है ना. दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड. इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेना, इसके बारे में, इस एजेंसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेने. कई बार न्यूज में रहता है. सो लेट्स से हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क सिटी, है ना, और इसकी बहुत सारी रिपोर्ट्स आती है. ठीक है. अक्सर मतलब साल में 2-4-6 महीना पे न्यूज में आते हैं ये. ठीक है. सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट. यस, डे आफ्टर टुमारो अगेन आई एम सेइंग 30th सितंबर को एट 11 in the morning विल बी हैविंग अ 6 hours मैराथन. ठीक है. उसमें जीके का भी सेशन होगा, है ना. सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, है ना. सो थैंक यू एवरीवन. Thanks for watching. Please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download the BYJU'S exam prep app. Thanks for watching. Have a nice day.